Hello, bachcho. Let's read the question. So here we have a incomplete reaction where the reactant is given to us, and when this reactant reacts with HBr and CH2, then what will be the product? We need to know that, and we need to comment on the optical nature of the product. Okay, whether it is optically active or whether it is optically inactive. Okay, and we have four options, that is racemic mixture, diastereomic mixture, diastereomer, or enantiomer, or optically inactive. Okay, so let's start. So let's draw this. Okay, when we add this HBr in this HBr according to the Markovnikov rule, that is MKR, and we have KCHLCS2. So according to Markovnikov rule, whatever the electrophile present here, it will attack with the it will attack with this HBr. The HBr will attack on the double bonds opposite carbon. Okay, so hydrogen will be added to this carbon. So here the carbocation will form, it will be a 3-degree carbocation which is the most stable. Okay, so यहाँ पे carbocation बनेगा, तो यहाँ पे जो carbocation बनेगा, it will be something like this. यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे H ऐड हो गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ऐड हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया. ओके, नाउ वी हैव Br माइनस बिकॉज H प्लस जो है वो रिएक्ट हो गया, तो यहाँ पे Br माइनस न्यूक्लियोफिलिक की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. ये इस पे अटैक करेगा और हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा Br. ठीक है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल here. Okay, so because it has a lone pair of electron. Okay, so this is the product. So here the carbon over here, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इधर से कोई ऐसे प्लेन बन जाएगा, so we can say that इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो डिवाइडिंग मॉलिक्यूल है, it is same. Okay, this Br, अगर इस Br को हम प्लेन के ऊपर मानेंगे और मिथाइल को प्लेन के नीचे मानेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज sp3 तो ये जो Br होगा, इट विल बी अबाव और मिथाइल होगा नीचे. ओके, बिलो. So we can say both the part are same, so we do not have any chiral center. Okay, no chiral center. Okay, no chiral center. So if the molecule doesn't have a chiral center, so we can say that that molecule is optically inactive. Okay, so this molecule doesn't have chiral center, so therefore it is optically inactive. So the product in this reaction is optically inactive product. Okay, so your option D will be our answer, that is optically inactive product. Okay, I hope the concept is clear.